लेट्स से थैंक यू 3 times फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट टू। जिन भी चीज़ों के लिए आपको थैंक यू बोलना है, रिमाइंड करो अपने आप को, और मन में 3 बार थैंक यू बोल सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। And with this feeling, let's start with the prayer. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। And welcome to Saturday. Saturday we focus on our stamina. जब भी हम स्टैमिना की बात करते हैं, if you notice, before even we get tired physically, the most important element that blocks our stamina is our breathing. जब भी आप स्टेयर्स चढ़ते हैं या कहीं ट्रैक पे जाते हैं या कहीं बाहर घूमने जाते हैं, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल टू गेट द वो ऐसे सांस फूलना जो बोलते हैं ना, लाइक यू आर becoming short of breath. So when you practice on stamina, we will do two parts. One, physically we'll do a little intense, malab as per your capacity, and then second, we will train on breathing in a very special way. Okay, so that's what we are going to do today. Let's all stand up. अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ. Let's continue to walk for 1 minute first. We start with a nice, simple, easy walk. And the format for the first 7-8 minutes is going to be, we practice little high intensity exercises. Now, this would be really high intensity. I would be in a medium range. So you can follow me if you are new to this or if you're not comfortable following high intensity. Okay. The first movement that we are going to do is called jumping jack. Very simple. You do this as a normal version. You do this as a difficult version. Now, the point is, go as fast as you can. We want to have this feeling of shortness of breath. हम खुद से ही अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करने के लिए फास्ट करेंगे, ठीक है? So go as fast as possible. Don't compare his or mine speed. Your maximum, your best. That's what we want. Ready? Round one, jumping jacks. 3, 2, 1, begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let go. The next one is called high knees. Two versions again, simple, challenging. This is what you're supposed to do in a simple version, and this is what you're supposed to do in the challenging version. Ready? 3, 2, 1, round 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Let go. We will do jumping jacks again. Second time. Ready? 3, 2, 1. Go for it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let go. High knees. Second time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let go. Relax. कभी भी अगर ऐसा हाई इंटेंसिटी हम कुछ करते हैं, ensure that you do not breathe from the mouth. You have to breathe only in the nose. The moment you start breathing in the mouth, you are overdoing it. Okay? So the limit, how do you know you're not crossing your limit? If you're not breathing from the mouth. If you're breathing in the nose and you're still breathing heavy, it is good, but you are not supposed to open the mouth. Okay? The next version, go down on the floor for mountain climbers. For those who cannot do this, we'll continue the same two movements. Mountain climbers ऐसे करते हैं. As fast as you can. Okay? Come on. Ready? 3, 2, 1. Go for it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let go. The next movement we do is called shoulder tap. So shoulder tap एक बार सामने से दिखा देना. ऐसे, हाँ. Right. Shoulder tap is like this. So you tap your shoulder alternate. For those of us who are doing with me, who cannot go on the floor, it's fine. We will just do the high knees again. 3, 2, 1, go for it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Prepare for mountain climbers again. 3, 2, 1. Go for it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let go. And shoulder taps. 3, 2, 1. Go for it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. And let's all stand up back. The next one, 2 more movements. सिर्फ 2 movement और करेंगे. अगले movement में क्या करना है आपको? ऐसे हाथ ऊपर रखना है और पैर को पीछे ले जाके ऊपर लेके आना है. 1, 2, 3 ऐसे करना है. ठीक है? Simple. Ready for it? Take your hands up. 3, 2, 1. Go for it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And change the side. Take your hands up. Leg is behind to start with and bring it forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let go. The next one, clap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Now sit down. आराम से बैठ जाओ. अगर आपको थोड़ा ब्रेथलेस फील हो रहा है, टाइप बी इन द चैट बॉक्स so that others also know that कि हम अकेले नहीं हैं, सबको हो रहा है. Now, if you want to quickly recover, this is what you need to do. 2 breaths in, 1 breath out. Breathe in, breathe out. Breathe in, out. 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 Relax. The next breathing that helps us with building stamina is Bhastrika. So let's sit in Vajrasana if you can. Loose fist in front of your shoulders, elbows close to the body. भस्त्रिका सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये बहुत डीपर लेवल तक काम करता है. प्राणायाम वर्क्स ऑन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेवल. ओके, सो बहुत सारे इमोशंस रिलीज करने में भी मदद करता है भस्त्रिका आपको. टेक अ नॉर्मल ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट. फॉर भस्त्रिका टुगेदर ब्रीद इन, आउट, इन, आउट. In 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10. Relax. अब मूल बंद लगाएंगे हम लोग. मूल बंद कैसे लगाते हैं? जब भी आपको वॉशरूम जाना हो और आपको जगह नहीं मिल रही हो तो आप क्या करते हो? यू पुल द मसल्स इन टू होल्ड, राइट? दैट्स कॉल्ड द मूल बंद. मूलाधार का जो लोकेशन होता है, तो जो मूलाधार चक्र होता है उसका लोकेशन होता है एट द टिप ऑफ द स्पाइन, एट द लोएस्ट टिप. सो यू हैव टू पुल द मसल्स इन. दैट हेल्प्स इन 2 ways. 1, it helps you to become more energetic and have more enthusiasm in life. Second, it also helps you with pelvic floor strengthening. So a lot of women after 35 start having this issue of weak pelvic floor, जिसकी वजह से कभी छींकते हैं तो यूरिन पास हो जाता है, खांसते हैं तो यूरिन पास हो जाता है, हंसते हैं तो यूरिन पास हो जाता है. तो या फिर प्रेगनेंसी में स्पेशली अगर आपका पेल्विक फ्लोर वीक है तो होल्ड नहीं कर पाता है. सो व्हाट यू विल डू इज पुल द मसल्स इन. ऐसे अंदर की ओर खींचना पड़ेगा. गुदा द्वार, द मसल्स अराउंड योर एनल रीजन, यू हैव टू पुल देम इन and hold it as much as possible. That's called the mool bandh. Okay. So the next round, what we do with Bhastrika, we'll apply the Mooladhar bandh or the Kegels hold. इसको Kegels hold भी कहते हैं. Round 2. Take positions. Normal breath in,
Breathe out. Together for Bhastrika. Breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10. Apply your lock. Kegels hold. Hold your breath while you're doing this as long as possible. Pull the muscles in. अंदर खींच के रखो अच्छे से tight. And you can relax whenever you feel like. Third and final one. Together for Bhastrika. Breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10. Let go. Apply your lock. And release. If you're sitting in Vajrasana, slowly come out and sit in Sukhasana. धीरे से आंखें खोल लीजिए. जो अगला हम ब्रीदिंग सीखेंगे ये फिजिकल ब्रीदिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पावरफुल प्रोसेस है. ठीक है, करना क्या है, हमारी ब्रीदिंग में 4 एलिमेंट्स होते हैं. वी हैव 4 एलिमेंट्स टू आवर ब्रेथ. ब्रीदिंग इन, होल्ड, breathing out and hold. The last hold, if you can increase that hold to a longer duration, normal breathing becomes better. I'll give you a different example. Suppose if you're lifting up 10 kilos of weight every single day, 5 kilos become easy for you, isn't it? Similarly, if you improve, or this is the strengthening part of your breath, if your breath hold after you breathe out increases, your overall breathing becomes better, right? हमारे शरीर में कुछ भी काम करना हो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. Everything that we do requires oxygen. If your breathing improves, you actually can do everything better. And a fun fact, if you lose 10 kilos of weight, 8 kilos goes out through your breath. जैसे अब वजन कम हुआ अगर तो कहीं तो बाहर जाएगा, राइट? तो वो 80%, 80% of your weight is lost through the process of proper breathing. Hence, it is very important that you breathe properly. Okay, so let's learn this process. It's very, very simple.
You just need to follow what I'm saying. By the way, we sent you 2 videos yesterday. One was on Kegel's hold, and second was on bolt test. So more on this in the upcoming week. But for now, just do whatever I'm suggesting right now. Okay. अगले हफ्ते और नई नई चीजें सीखेंगे. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, and breathe in, breathe out. सांस छोड़ो, नाक दबाओ, मुंह बंद करो और सर को ऊपर नीचे 10 बार करना है. And breathe in. Relax. सेम वे हम हर बार 10, 11, 12, जैसे अभी 10 बार ऊपर नीचे किया वैसे 11 बार ऊपर नीचे करेंगे, फिर 12 बार, फिर अगले राउंड में 13 बार. यू विल हिट योर मैक्सिमम. इफ यू हैव अस्थमा, इफ यू हैव हाई बीपी, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग दिस, stick to 10. Every time you do 10, we will improve over time. But if you do this process every day, your breathing becomes phenomenally great. Okay, let's do it with us. Breathe in, breathe out. Hold your breath, pinch your nose 10 times up and down. Breathe in, breathe out. 11 times up and down. Breathe in, breathe out 12 times. Breathe in, breathe out 13 times. Breathe in, breathe out. Hold your breath, pinch your nose, keep your mouth closed 14 times. Breathe in, breathe out 15 times. Continue. अगर आपको लग रहा है 14 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हर बार 14 करो. आपको लग रहा है 12 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, 12 करो. बीच में एक बार एक्स्ट्रा सांस लेना पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम. डू एज मच एज पॉसिबल. इट्स जस्ट डे 1, पहली बार आप कर रहे हो शायद ये, तो इजी तो नहीं होगा. धीरे धीरे वो मुश्किल होता चला जाएगा और आपका कैपेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ेगा. ओके, लेट्स डू इट 16 टाइम्स. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. हर बार सांस छोड़ने के बाद ही सांस रोकेंगे. सांस लेने के बाद रोकने से कुछ अलग होता है, सांस छोड़ने के बाद रोकने से कुछ अलग होता है. सो वी आर वांटिंग टू डू ओनली the breath hold after we breathe out, not after we breathe in. Okay, both the holds are different. Breathe in again, breathe out. 17. So do on your own. 17, 18, 19, 20 खुद से करो. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. 19.
Last time on your own. अपने आप से करो. हमारे क्लास में इतने सारे लोग आते हैं और मुझे हर बार ये सुनने को मिलता है कि हम कोई यात्रा पे गए, कोई ट्रैक पे गए, कोई पहाड़ चढ़ने गए, या लिफ्ट बंद हो गई थी तो स्टेयर्स चढ़ा और ब्रीदिंग का इशू ही बंद हो गया है. I have heard this so many times that I don't have the breathing problem now. I can very well climb stairs, go on a trek, go on a yatra, everything. Why? Because this breathing is really very powerful. Just the point is you need to do every day. I know you're learning so many things and you might feel a little overwhelmed, but when you do it, like break करके भी कर सकते हो. जैसे हफ्ते में हम अगले 2 हफ्ते तो प्रैक्टिस करेंगे ही साथ में. So I will ensure that you have the best takeaways for what you want. Okay. Now a quick update. Tomorrow is Sunday. On Sundays, we do not have normal sessions like the morning and the evening session. We do not have the morning and evening sessions. Rather, we have a special session on how to fix our routine. रूटीन को कैसे फिक्स करना है, कौन से समय क्या एक्टिविटी करने से बेटर होता है और उसके पीछे का साइंस क्या है. व्हाट इज द साइंस बिहाइंड doing activities at particular time and what's the benefit of it. Okay, so we are going to talk about a lot of things tomorrow. The timings will be 11 a.m. and 6 p.m. So you can join either session. Either you can do the 11 a.m. session or you can do the 6 p.m. session. Both sessions are going to be same or similar. Okay, and then we'll also do a Q&A after that, so that if you have some questions for what we did in the entire week, you can ask questions as well. Now what we are going to do is we are going to do Nadi Shodhan Pranayam for 5 minutes, and then I'm going to guide you into a short meditation. A quick update or quick understanding about what is meditation. First of all, meditation is not concentration. Okay, meditation is deconcentration. It's like very similar to sleep. If you are trying to sleep, we eventually end up not sleeping. बहुत कोशिश कर रहे, नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए, तो क्या होता है, हमको नींद नहीं आती है. सिमिलरली लाइक मेडिटेट करना है, फोकस करना है, तो वो मेडिटेशन नहीं है. जब आप रिलैक्स करते हो अपने आप नींद आती है, वैसे ही जब आप रिलैक्स करते हो अपने आप मेडिटेशन होता है. यू कैन नॉट डू मेडिटेशन. मेडिटेशन इज अ हैपनिंग. लाइक ऐसे नहीं बोलते हैं ना, आई डू स्लीप, मतलब मैं स्लीप कर रहा हूं, ऐसे नहीं बोलता है. मुझे नींद आ गई ऐसे बोलता है, या ऐसे नहीं बोलता है ना, हम कुछ नहीं करते हैं नींद को लाने के लिए, वो अपने आप आती है. वैसे मेडिटेशन इज सिमिलर टू स्लीप, बट इट जस्ट दैट मेडिटेशन हैज अ बिट ऑफ अवेयरनेस वेयर स्लीप हैज नो अवेयरनेस. दैट्स द ओनली डिफरेंस. सो आई एम गोइंग टू गिव यू इंस्ट्रक्शंस. When I give you instructions, do not force yourself on instructions. And I'll give you example for that as well. Suppose I tell you, think about an apple. What will you do? You will automatically think about an apple. Now, what is forcing on this thought? Oh, is this a red apple? Is this a bada apple? Is this a chota apple? कितने रुपए का है एप्पल? बहुत महंगा हो गया है एप्पल. This is called pushing or thinking too much. Okay? So, just keep your eyes closed, relax, and do whatever is happening. When I tell you think about an apple, it will automatically come in your mind. You do not have to do anything about it. Similarly, when I am giving instructions, it will automatically happen. Even if it doesn't happen, your primary role is to keep your eyes closed. That's it. Am I clear? Okay. I hope I'm clear. Next upcoming week, we'll practice whatever we did in this week a little more better. थोड़ा और बेहतर करेंगे. जैसे आज हमने कुछ नई नई ब्रीदिंग भी सीखी है, तो उसको भी हम और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. तो आपके पास ना बूफे है अभी. आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. Okay, so Nadi Shodhan Pranayam for 5 counts, 5-6 counts, and then we will do meditation. If you wish to take a back support, you may do so. आप एक आराम से कुर्सी पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं. पीठ को सीधी रखने की कोशिश करेंगे जितना हो सके, बट रिलैक्स करके बैठेंगे. बहुत स्ट्रेस या स्ट्रेन में नहीं बैठना है. रेडी? सो नाडी शोधन प्राणायाम. लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा, राइट हैंड index and middle finger between your eyebrows, thumb on the right nostril, ring finger, little finger on the left nostril. So either you can do this or you can do this, whatever is your choice. Take a deep breath in, close your right, breathe out left. Breathe in left,
Close your left, breathe out right. Breathe in right. Close your right, breathe out left. Breathe in left. Close your left, breathe out right. Breathe in right. Close your right, breathe out left. Breathe in left. Close your left, breathe out right. Breathe in right. Close your right, breathe out left. Breathe in. Breathe out. 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 Breathe in. Out. In. Breathe out. Relax. Keep your eyes closed. Sit absolutely comfortable. आराम से बैठ जाए. आंखें बंद ही रखेंगे. Keep your eyes closed. Take your attention to different sounds in the surrounding. वातावरण में हो रहे सभी आवाजों के प्रति सजग हो जाए. दूर से कोई आवाज आ रही हो, sound which is coming from far away, maybe sound of the traffic, maybe sound of the birds, sound of people talking around, if there are any. Take your attention to the sound in your surrounding. Sound of the fan, become aware of all the noises वातावरण में हो रहे सभी आवाजों के प्रति सजग हो जाए. Take a slow deep breath in and breathing out, accept all the noises. सभी आवाजों को स्वीकार कर ले. Be one with the nature and relax completely. पूरी तरह विश्राम करे.
Gradually become aware of your own body. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए. Our body is a precious gift of Mother Nature. हमारा शरीर प्रकृति का एक सुंदर उपहार है. Honor and respect our own body. अपने शरीर को पूरा आदर और सम्मान देंगे. It's the only place we have. Something that will be with us forever. बस शरीर ही है जो हमारा साथ हमेशा देगा. Keeping your body still like a statue, take your mind towards your feet. शरीर को मूर्ति की तरह स्थिर रखते हुए मन को पैरों की ओर ले जाए. Relax your feet. Take your mind towards your knees. धीरे धीरे मन को घुटने की ओर लेकर आए. Relax your thighs and your glutes. जंगा और नितंब. दोनों पैरों को ढीला छोड़े. Relax both your legs. Take your attention to your genitals. जननेंद्रियों की ओर ध्यान ले जाए. Stomach and navel region. पेट और नाभि की ओर ध्यान ले जाए. Chest region. छाती, हृदय. Relax your spine and the back. Relax your shoulders. कंधों को ढीला छोड़े. Relax your neck. Take your attention to the back side of your head. Top of your head. Forehead and all the facial muscles.
पूरे शरीर को ढीला छोड़े. रिलैक्स योर होल बॉडी. जेंटली टेक योर अटेंशन टू योर थॉट्स. विचारों के प्रति सजग हो जाए. You can have good thoughts. You may not have good thoughts. मन में अच्छे विचार बुरे विचार दोनों हो सकते हैं. You might have lot of thoughts. You might have no thoughts. Just be in acceptance. बहुत विचार हो बिल्कुल विचार ना हो, पूरी तरह स्वीकार कर ले जो भी हो रहा हो. डू नॉट रेजिस्ट एनी थॉट. किसी भी विचार का विरोध नहीं करेंगे. Become aware of your feelings and emotions. मन में जो भी भावनाएं उठ रही है उनके प्रति सजग हो जाए. You might be feeling good, you may not be feeling good. Accept as it is. अच्छा लग रहा हो बुरा लग रहा हो जैसे भी लग रहा हो स्वीकार कर ले. Drop all your efforts and relax completely. सभी प्रयत्न छोड़कर पूरी तरह विश्राम करें. You are peace. You are joy. You are love. आप ही शांति हो, आप ही खुशी हो, आप ही प्रेम हो. Relax more and more. पूरी तरह विश्राम करें. Become aware of your feelings and emotions. भावनाओं के प्रति सजग हो जाओ. Become aware of your thoughts. विचारों के प्रति सजग हो जाओ. Become aware of your body and your surroundings. शरीर और वातावरण के प्रति सजग होते होते लंबी गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए आपका मन करे तो आंखें खोल सकते हैं. You can open your eyes only if you feel like. If you feel like keeping your eyes closed for some time, you may do so. No problem. But welcome back. Welcome back to the real world. So I hope it was good. For some of us, first experience might be too many thoughts, which is absolutely fine. ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला